तो पॉटलक का कोई अपना एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है क्या जिसपे चैटिंग एटिंग होती है, बातें होती मैंने है? अभी कहा कितने जिस सारे ग्रुप्स हैं। जिसके बारे बहुत में सारे डायरेक्टर्स को ग्रुप्स हैं। नहीं पता या राइटर्स को नहीं पता। मतलब व्हाट्सएप हैज मेड इट सो इजी ना कि मतलब आज मुझे बात करनी है सिर्फ आई डोंट नो पिक समथिंग कि हाउ माय हाँ। प्लांट डाइड टुडे बिकॉज आई ओवर वाटर्ड इट। और मुझे पता है कि ये इंसान अंडरस्टैंड नहीं करेगा पर ये दो अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं इनके साथ ग्रुप स्टार्ट कर दूंगी। कौन सी जगह होती है जहां आप अमूमन पाए जाते हो लोगों को ऑब्जर्व करते हुए? एवरीवेयर आई एम वेरी गुड। आई कैन बी हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद यू राइट नाउ। अभी मेरे घर पे कोई नहीं है पर ओके। अगर कोई होता तो आई कुड हाँ। हैव दिस कॉन्वर्जेशन एंड कीप ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। यू नो इन दिस डे एंड एज जहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं ऑफ कंटेंट ऑनलाइन, but there are very few stories that you can watch with your family that the entire family can watch together. Potluck is definitely one of them. सो हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है बादशाह रे एंड यू हैव जॉइंड मी फॉर येट अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन एंटरटेनमेंट लाइव। जॉइनिंग अस इज शिखा तलसानिया, जिनका एक सीरीज आया है पॉटलक, उसका सीजन 2 आ गया है। पॉटलक 1 में हमें क्या पता चला था और पॉटलक 2 में क्या होने वाला है, ये सीधे उन्हीं से जानते हैं। हाय शिखा, वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव। हाउ यू डूइंग? Thank you so much. Thank you so much. I'm doing well. I'm a little under the weather thanks to the weather that we have in Mumbai. हम्म। But I'm good. And I'm very excited because Potluck 2 season 2 is finally releasing on the हम्म। 24th. So yeah, I'm very, very excited. That's how I am. तो सीजन 2 से क्या एक्सपेक्ट करें? ट्रेलर में तो बहुत कुछ पता चल रहा है कि हमारे परिवार के जो किरदार हैं उनकी जिंदगियां अब काफी फैल गई हैं। जी एंड जी जी। पॉटलक का जिन लोगों को मतलब नहीं पता, तो एक नाउन की तरह अगर इसका प्रयोग करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो है सही है, इसी में काम चला लो, यही बेस्ट है। तो करेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू द शास्त्री परिवार पॉटलक का मतलब ये है कि द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। एब्सोल्युटली। तो क्या होने वाला है इस शो में? क्या एक्सपेक्ट करें? द इस बार वंस क्या हु नया है? जिन्होंने पॉटलक सीजन 1 नहीं देखा है मैं तो पहले कहूंगी प्लीज देख लो भाई। हाँ। इट्स अ वेरी क्यूट स्टोरी। हमने बहुत ही बहुत सारा दिल लगा के वो सीजन क्रिएट किया है। राइट। एंड सीजन 2 में आप देखेंगे कि द टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर एवरीबॉडी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है। सबकी लाइफ में क्वर्क्स सेम है। हम्म। फैमिली जो है वो अभी भी पागल ही है। पर जिंदगी जैसे होती है रोज कुछ ना कुछ नया होता है। एंड विद द शास्त्रीज इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी द वेदर, इट कुड बी एसी नहीं चल रहा, इट कुड हाँ। बी एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट, कुछ भी हो सकता है। सो हाँ। सबकी लाइफ ऑल द एवरीवन, गोविंद शास्त्री, प्रवीणा शास्त्री, उनके बच्चे, द टू बॉयज एंड देयर वाइव्स, एवरीवन इज गोइंग थ्रू डिफरेंट journey and adventure in their own private in their own lives as an individual, including Prerna with her, which is the character that I play. Prerna and her parents, Prerna and her father and her mother and her brothers and her sister-in-laws, and Alim, हम्म। her the love of her life. Well, we don't know yet. You will see whether he's the love of her life or not in season 2. इंटरेस्टिंग। अच्छा, शास्त्रीज की फैमिली काफी इंटरेस्टिंग है, काफी क्रेजी है, काफी मस्ती करती रहती है। तो जी। रियल लाइफ और रियल लाइफ फैमिली के बीच में आप क्या कुछ पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं? क्या लगता है? हाउ क्लोज इज Uh, ऑफ कैमरा फैमिली विद ऑन कैमरा फैमिली? the Shastri Parivar on family is far it's tamer than the off screen family because जो we're playing quirky characters पर हम इंडी। जो है रियल लाइफ में एक से लेके एक बड़ा वाव पागल है। बट नो ट्रूली वी आर वेरी वेरी क्लोज। हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है। इट इज कंफ्यूजिंग। सिद्धांत हम्म। एक्चुअली गेट्स रियली रियली कंफ्यूज बिकॉज लाइक कौन सा ग्रुप कौन क्या मैसेज कर रहा है, आई कांट कीप अप। And we're truly very very close. We don't get to meet each other that often thanks to our own lives and work and families and stuff like that, but whenever possible we really really try to meet each other, and we're crazier off camera also.
एब्सोल्युटली। अच्छा, आपके सीरीज के में जो बहुत अच्छी बात है और बहुत खूबसूरत बात है वो ये है कि इसमें बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज को ना बहुत ही मतलब एक स्लाइस ऑफ लाइफ या स्पाइस ऑफ लाइफ कह लें उस स्टाइल में दिखाया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जिनको लेके अमूमन इंडियन सोसाइटी में अभी भी लोग हिचकिचाते हैं बात करने में, वन बीइंग कपल थेरेपी। तो ऐसे ऐसे इश्यूज को जब आप टैकल कर रहे थे अपने शो के थ्रू, तो व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? मतलब प्लान क्या था कि ऐसे ही रखना है, लाइट रखना है, सीरियस रखना है? व्हाट डू यू थिंक इज You वाज know, कॉन्शियस कॉल देयर? to keep it a bit, to not delve into it too much, because we हम्म know that it's a dramedy for sure. हम्म We know the genre that we're working with, and we were conscious about that. And the writers, the makers, and us also, the cast and crew of Potluck, we were very conscious of that fact. But at the same time, I have to say, life is like that. You know, life is funny, life is weird, life is irritating, life is sometimes deep, sometimes shallow, you know. हम्म हम्म Like there are days where you're just discussing with, like every time you have a discussion, say for example, just as an example, if you're having a discussion with your parents saying that, I think I need to go to therapy, or you're talking to your partner saying I need to go to therapy, but उसके साथ तुम ये भी बात कर रहे हो कि पर मैं थोड़ा लेट आऊंगी तो प्लीज खाना फ्रिज में रख देना, बाहर मत रखना, खराब हो जाएगा. That is life, and that is potluck. दैट्स So एब्सोल्युटली। it's very relatable. अच्छा, रिलेटेबिलिटी की बात करें तो हमारे परिवार में ऐसा होता है कि हमारा एक कोई फेवरेट सिबलिंग होता है या भाई होता है या दोस्त होता है। तो आपकी जो ऑन स्क्रीन फैमिली है पॉटलक की, उसमें सबसे क्लोज कौन है आपके? Yeah, you're going to really, uh, you know, I have to say this because, look, I don't know. You can ask the others. I don't हम्म know if they'll agree, but I think I have a special relationship with everyone. ओके मैं सबसे बहुत close हूँ. हम्म Um, you know, Ira and I have our own equation. Saloni and I have our own equation. Harman and I have our own equation. Harman, Saloni and I have our own equation. Sai and I have our own. Like all of us have our own relationship. And then as a group also we have our relationship. But I know, I'll be very honest, like it's one of those times and those few moments in your life, in your career, where you're part of an ensemble cast, जहां आप सिर्फ एक इंसान को मैसेज नहीं कर सकते. आपको सबको मैसेज करना पड़ेगा, हम्म because that is the kind of bond we have, to be very हम्म। very very honest. तो पॉटलक का कोई अपना एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है क्या जिसपे चैटिंग एटिंग होती है, बातें होती मैंने हैं? अभी कहा जिस, कितने जिस सारे ग्रुप्स हैं. जिसके बारे बहुत में सारे डायरेक्टर्स को ग्रुप्स नहीं हैं. पता या राइटर्स को नहीं पता? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स है. फिर कास्ट के अंदर भी एक और, मतलब देयर इज वन मोर स्मॉलर ग्रुप आल्सो, बिकॉज यू वांट लाइक, और मतलब व्हाट्सएप हैज मेड इट सो इजी ना, कि मतलब आज मुझे बात करनी है सिर्फ, आई डोंट नो, पिक समथिंग, कि हाउ माय हाँ प्लांट डाइड टुडे बिकॉज आई ओवर वाटर्ड इट, और मुझे पता है कि ये इंसान अंडरस्टैंड नहीं करेगा पर ये दो अंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं इनके साथ ग्रुप स्टार्ट कर दूंगी. तो ऐसे तो राइट। बहुत है यार. अच्छा, ऐसे जब वेब सीरीज में आप काम कर रहे होते हो जहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इतने सारे पैरेलल स्टोरी लाइंस होती हैं, तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्कोप रहता है? कभी ऐसा होता है कि सीन में तो ये लिखा नहीं था लेकिन ये हो गया एंड ये क्या हो गया? Potluck जो है ना, it's mostly just improvised. Okay, I have to tell you, क्योंकि we keep adding here and there. And to be very honest, हमारे जो creators हैं, writers हैं, and our director, and all of us, they told us that please make the lines your own, please make the scenes your own. And we had a lot of readings also, and we had a lot of sessions with the script, just reading the script and the episodes, कि हम decide कर रहे थे कि, और हम इतने, हमारे characters हम बन चुके हैं, हम्म कि लाइक नहीं यार, ये प्रेरणा ऐसा नहीं करेगी, प्रेरणा ऐसा करेगी. So we also were telling our creators that, saying that I think maybe you should try this, or maybe you should try that. So it's a very collaborative effort, season 1 and 2, and I'm sure the rest of the seasons that are going to come will also be the same. Our environment has always been very conducive to collaboration. पर I have to say, you can ask Rajshri about this, हमारे director जो हैं, आप उन्हें हम्म पूछ लीजिएगा. हम्म She told me I am the best when it हम्म। comes to improv at the end of the scene. जब सीन खत्म हो गया पर मैं कभी भी ऐसा, improv मेरा चल रहा है. अच्छा, आपसे ये हम कैसे ना पूछे, यू कम फ्रॉम अ लीनिएज ऑफ सच अ फाइन एक्टर, टीकू सर,
एंड उनकी कॉमेडी तो लाजवाब है ही. एंड I personally have grew up watching him on screen perform so many roles over the year. So when you are preparing for a role, do you exchange notes with him? क्या वो आपको advice करते हैं? क्या वो आपका काम देखते हैं? नहीं? काम देखते हैं जी, एडवाइस देते हैं जी, पर यार, my parents have brought us up, my brother and I both, as with a really strong sense of the individual that you need to be and you are. So क्रिएटिविटी ऐसी बात भी है ना यार कि आप से फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, आप पूछ लोगे कि मुझे ये इक्वेशन पता नहीं है, पर क्रिएटिविटी ऐसी चीज है कि आप शायद पूछ भी लो, आपको जो आंसर चाहिए वो शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस आंसर में आपको कुछ मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा, बट द रेस्ट ऑफ इट वोंट अप्लाई टू यू. इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, क्रिएटिंग आर्ट, टेलिंग अ स्टोरी. And honestly, have not asked my parents for like I haven't gone with scene work to them ever. There are other aspects of this career that I've chosen that I definitely go to them and I talk to them about. But when it comes to performing or directing, there's always advice given when they see it or they've been invited to say that I've written something. Would you read it? अब मेरा प्ले देखने आइएगा. उसके बाद obviously critique तो मिलता है, and we do that for each other all the time. And you learn from it, saying, oh yeah, maybe that is a good idea. Maybe I should use this light, or I should say it in this manner. But when it comes to preparing something, then no, I have never gone to my parents to say, how do I say this line, for example. But having said that, the environment that I grew up in, it was so magical, yeah. I can't, and I'm so grateful for the experiences that I've had of watching my parents on stage, watching all the other artists that they performed with on stage, behind backstage, even on screen. There's just so much to learn. And I have been an observer for life. That's my favorite thing to do, is just sit in a corner and just observe people. It's the most beautiful thing ever because you can feel so much. और कहीं आपके सबकॉन्शियस में ये सब ऐसा डाउनलोड होते रह रहा है, it keeps downloading in your subconscious, and then you use it sometime or the other, and you don't even realize that you've stolen it from someone. एब्सोल्युटली. तो ये ऑब्जर्वेशन आप अगर जैसे किसी को पता करना हो कि शिखा इस टाइम पे यहाँ ऑब्जर्व कर रही है, तो वो कौन सी जगह होती है जहां आप अमूमन पाए जाते हो लोगों को ऑब्जर्व करते हुए? इज इट रोड साइड और इज इट होटल मोटेल या किसी पार्टी में या कहीं भी? एवरीवेयर. आई एम वेरी गुड. आई कैन बी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू राइट नाउ. अभी मेरे घर पे कोई नहीं है, पर अगर कोई होता तो आई कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन एंड कीप ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. Interesting. तो ऐसा it's really small things, yeah. Like you and I having a conversation, but somebody else is having a conversation, as an example, or is trying to find a glass to pour their water in. And say for example, AC नहीं चल रहा है, and ये इंसान जो है वो मतलब सिर्फ this is the only way of dabbing their sweat. लोग ऐसे करते हैं अपना स्लीव लेते हैं, फिर ऐसा कुछ करते हैं, whatever, so it's just the small things you're just downloading in your head. That's so cool. तो आप तो डायरेक्टर का काम आसान कर देते हो, मतलब ज्यादा लेयरिंग उसे करने की जरूरत. हाँ, मैं हूँ डायरेक्टर. I have co-directed a play called Big Behan, which is we've just completed 101 shows of that. I've directed another thing called Where's My Avocado during lockdown. I've directed, written, and I've performed in a small monologue that I've just done recently. So directing तो मैं कर रही हूँ, but mostly for theater right now, not behind the camera yet. अभी तक वो confidence नहीं आया है. लेकिन we hope कि जल्दी. Fingers crossed. Fingers crossed. All right. So, Shikha, one final question I want to ask you कि जिन्होंने पॉटलक सीजन 1 नहीं देखा या 2 नहीं देखा, वो क्या एक चीज है जिसके लिए उन्हें देखना चाहिए? वो क्या एक चीज है जो ऑडियंस अपने साथ लेके जाएगी when they watch पॉटलक? Everyday life. There's so many things. Okay, wait. Let me answer this nicely. Let me round it off nicely. Let me make a good pitch. In this day and age, जहाँ इतने सारे options हैं of content online,
or wherever you're watching it. इतनी सारी अलग stories हैं viewers के लिए, audience के लिए. But there are very few stories that you can watch with your family, that the entire family can watch together. Potluck is definitely one of them. Potluck 1 and 2, we're dealing with a lot of stuff that all of us deal with. But we're using the medium of comedy and heart, and just only heart to tell you that story. And it's something which you will relate to for sure. You will watch it and you're like, oh my God, my dad is like this only when it comes to technology, doesn't understand anything. Or you look at it and say that this is exactly how my brothers, pull my leg. Or your parents might look at it and saying, see, this is how useless all children are. They never listen to our advice. We know best. Or you're trying to explain to your partner that, this is my time to do something. I want to do something for myself. Young parents will also be like, this is exactly what it's like to focus on work or to focus on my children. How do I balance the both? You've worked or you've been a particular person for most of your life, and suddenly you don't know who you are anymore. And you are trying to rediscover yourself. You're falling in love. It's everyday life. It's your family. इंटरेस्टिंग. ऑलराइट, सो आई थिंक ये सुनने के बाद जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जरूर जाके देखेंगे. पॉटलक सीजन 1 2 तो आ ही गया है. यस यस, लोग तो देखेंगे. आपने देखा है कि नहीं वो बताइए. सीजन 2 नहीं देखा मैंने. मैंने सिर्फ उसका वो तो रिलीज नहीं हुआ है, पर मतलब वो तो रिलीज ही नहीं हुआ है ना. वो तो रिलीज होगा 24 फेब को. पर आपने सीजन 1 देखा? सीजन 1 देखा है मैंने. डिड यू एंजॉय इट? यस, मैंने इसीलिए तो पूछा कि यस, मैं वही तो कह रहा था कि पहले सीजन में रायता फैल रहा था. इस बार तो मतलब फैल चुका है. हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं और पागलपन हो रहा है. बट टेल मी वन थिंग, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. Out of all the Shastris, who do you relate to the most? Interesting question. क्योंकि वही जैसा आपने कहा ना, जैसे फादर का सीक्वेंस है, वो टेक्नोलॉजी वाला जो बात आपने कही. अभी मैं अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को जैसे अभी तो थैंक गॉड फेसबुक व्हाट्सएप वो समझ गए. इंस्टाग्राम अभी भी उनका गेम नहीं है, इट्स आउट ऑफ देयर. या आई नो. लेकिन अब मैं उनके अंदर वो जील देखता हूँ, तो वो चाइल्ड लाइक एटीट्यूड. तो हमें बताना पड़ता है बहुत सारे संभल के, ये क्या पोस्ट कर रहे हो, ये क्या डाल रहे हो, एक बार बता तो दो, एक बार दिखा तो दो. फिर दूसरा है हरमन. हरमन थोड़ा रिलेटेबल इसलिए लगता है क्योंकि हमारे भी जैसे जॉब में जो क्राइसिस होता है, हम भी बैठे रहते, हम बैठ के कहीं कुछ कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही रखा हुआ है, तो वो भी चल रहा है. सो लाइक यू वेरी राइटली पुट इट कि सब कैरेक्टर्स में ना हमें एक एक शेड ऐसा लगता है कि यार ये मेरे साथ कहीं हुआ है, ये मेरे साथ इधर कहीं हुआ है. फिर मॉम, जैसे सेकंड सीजन के ट्रेलर में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया कि नाउ द मॉम वांट्स टू रिक्लेम हर लाइफ, नॉट क्लेम, रिक्लेम, कि भाई हो गया बहुत, अब मुझे रिक्लेम करना है. तो वो भी कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं. जब जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर, शी यूज्ड टू वर्क, शी हैड अ डिफेंस बैकग्राउंड. उन्होंने अब काम छोड़ दिया, मतलब रिटायर. यस, अब वो रिटायर हो गई, अब वो घर पे. नाउ शी इज ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग्स, यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ नया रेसिपी ट्राई करना या कुछ डिफरेंट चीजें करना. तो वो चीजें कनेक्ट होती हैं. एंड इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये जो चीजें हैं इनको लेके अमूमन हमारी फैमिलीज में बात नहीं होती है. बहुत होती भी हो तो बहुत हश हश टोन में. माँ ने बेटी से बात कर ली, या माँ ने बेटे से बात कर ली, या बेटे ने बाप से बात कर ली, या बाप ने कभी बात ही नहीं की. बहुत खुरेदना पड़ता है. प्लीज यार बोल लो. हमारे फादर बहुत बात करते हैं. हमारे गोविंद शास्त्री बहुत बात करते हैं. यस. तो मैं भी चाहूंगा कि सबके फादर्स ऐसे ही अपने बेटों से, अपने बेटियों से बात करें और ओपन अप करें. Shikha, thank you so much. It was a really fun conversation, and it was a pleasure having you on our show here on Entertainment. Thank you. The feeling is mutual. The feeling is absolutely mutual. Thank you. And please, guys, जाइए देखिए Potluck season 2, streaming only on Sony Live. All right. Bye bye. Take care and namaskar. Bye.